proper fractions, unit like fractions and unlike fractions. That's right. Anand Bhandari. Say there are 6 types: unit, improper, proper, mixed fraction, like fraction, unlike fractions. That's right. Now I will just go over all these types before we start with our work. Let's just give me a minute here. So when we talk about fractions, please don't write down, just pay attention. हम रिवाइज कर रहे हैं, हमें फ्रैक्शंस के बारे में क्या क्या पता है. तो फ्रैक्शंस जब हम लिखते हैं इस तरह से लिखा जाता है. रिप्रेजेंटेशन, यू विल हैव अ नंबर, नीचे एक लाइन लगाते हैं, फिर नीचे एक नंबर लिखा होता है. जो ये ऊपर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे नंबर है हम इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. मैं रेफरेंस के लिए कैपिटल एन और कैपिटल डी यूज करूंगी. जहां पे कैपिटल एन लिखा होगा उसका मतलब होगा न्यूमरेटर, जहां पे कैपिटल डी लिखा होगा दैट वुड मीन डिनोमिनेटर. तो जब हम इस तरह से, नो बेटा यू डोंट हैव टू राइट डाउन, जस्ट पे अटेंशन. व्हेन यू फॉर्म अ नंबर लाइक दिस, आप कोई भी नंबर, लेट अस टेक एन एग्जांपल. Okay, I'm going to ask you to make sure that you are muted at all times unless you are answering a question or you are asking a question. Please raise your hand before you unmute yourself. Fractions हम use करते हैं जब हमें किसी भी चीज के पार्ट्स को शो करना हो. Fractions are used to represent parts of a whole. The simplest example that I will consider here is if you have a pizza. Let us say you have a pizza and the pizza is divided into 8 equal parts. इसमें से अगर आपने 2 slices खाए, how much pizza did you eat? 6 over 8. 6 over 8 is the answer. 6 over How 8 much is did the you answer. eat? Okay, 2 over 8. 2 over 8. 2 over 8. 2 over 8. 2 by 2 over 8. 2 by 8. 2 by 8. 2 over 8. 2 by 8. We are forgetting about the option to raise our hand. Manreet, Gurshan, Anhad, Ryan, and Daman, they have raised their hands. The rest of the students like directly answering. Arman has also raised his hand. Tanveen, Tanvi, Angadmeet, Parth, Sia, Samaira. Now the students are raising their hands. मुझे remind करवाना पड़ेगा ना hands raise करने के लिए. You will not answer like this. Please make sure you are not going to answer collectively. I can see now 12 students have raised their hands. I want you to put your hands down. So I've got the answer. 2 parts are eaten out of 8. So जब हमने इस तरह से शो करना हो कि पूरी चीज का कुछ पोर्शन ईट किया किसी ने, या किसी कंप्लीट वैल्यू में से कुछ हिस्सा यूज किया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं. डिनोमिनेटर जो होगा वो शो करेगा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था,
और जो वैल्यू ऊपर है वो ये शो करेगी उन टोटल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट्स यूज किए हैं या फिर हमने कंज्यूम किए हैं। यहाँ पे जो पिज्जा था इट वाज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 2 स्लाइसेस हमने अगर खाए हैं, द portion or the part of the pizza that we have eaten is written as 2/8. The number 2 is your numerator, the number 8 is your denominator. It always tells the total number of parts. The denominator always tells you the total number of parts. Based on what type of numerator and denominator we have, we can identify or we can classify the fraction as unit fraction, proper fraction or improper fraction. Unit fraction में आपके पास जो न्यूमिरेटर होगा वो 1 होगा. If the numerator is 1, irrespective के denominator क्या है, अगर न्यूमिरेटर 1 है उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जो ऊपर वैल्यू होगी वो छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी. Then we have improper fraction. Improper fraction is the one जिसमें numerator denominator या तो equal हो जाए या फिर numerator बड़ा हो जाए. If I had to write examples for these, अगर मुझे example लिखनी हो इन सभी के लिए, so I could write like this: 1/8, 1/7, 1/75. ये सारी unit fractions हैं. Proper fractions की example 1/5, 2/9, 3/17, etc. For improper fractions, I could take 5/5, I could take 5/2, or I could take 11/3. Anyone with any questions here? Okay, I'm going to allow you to unmute yourself, but please make sure that you don't answer collectively. If you have a question, then please ask. Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, are you in the mathematics group? Yes. Okay, ma'am. Ma'am, if we have eaten two pieces and a half piece of a pizza, ma'am, then what will be the fraction of the eaten parts and the not eaten parts? You will be writing down 2.5/8, and then simply stating you can only write down fraction if your pizza is divided into equal parts. So if you're saying you've eaten 2.5 parts, तो आपने एक और slice का half खाया है? This is what you're saying? Yes, ma'am. Right, this is 1, this is 2, and this is a half. So what I would like to do is I would like to divide all the pizza slices into half. जितने सारे के सारे पिज्जा स्लाइसेस हैं 8 है ना, उसको आप डिवाइड करके कितने बना लो, 16 पार्ट्स बना लो. Then we can say 5/16. Yes, and then you have eaten 5/16 portion. Excuse me, ma'am. Yes. Okay, ma'am. मैम 6th में ना हमें ऐसा का एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड आउट शेडेड पोर्शन. मैम उसमें लाइट शेडेड पोर्शन भी थे, तो मैम अगर पेपर में लाइट शेडेड पोर्शन हमें ना दिखा तो मैम फिर मार्क्स में हमें कट जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं मार्क्स कर देंगे आपके. Excuse ma'am. Yes. Ma'am, can you explain it again as proper fraction and improper fractions? Sure. Once you have your part of a whole represented in the form of a fraction, looking at the numerator and denominator, you can tell what type of fraction you have. If your numerator is 1, अगर numerator 1 होगा, denominator जो मर्जी हो, odd, even, however large, however small, सिर्फ numerator को देख के decide कर लेना है कि fraction unit fraction है कि नहीं. Then you have proper fraction. Proper fraction will be something where the numerator is smaller and the denominator is bigger. Proper fraction में आपके पास जो numerator होगा, it will be smaller, denominator will be bigger. Okay, ma'am. जैसे आपके मार्क्स आते हैं,
but when your numerator and denominator become equal to each other, full marks आ गए किसी के, वो फिर improper हो जाएगा. Suppose आपका 50 marks का पेपर हुआ, तो मिनिमम स्कोर हो सकता है 0 out of 50, हाईएस्ट हो सकता है 50 out of 50. तो हम लेंगे 0 out of 50 से लेके 49 out of 50 तक. वो सारी की सारी फ्रैक्शंस जो होंगी वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी. 0 out of 50, 1 out of 50, 2 out of 50 से लेके 49 out of 50, ये सारी की सारी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है. लेकिन जैसे ही हम क्रॉस कर दें 50 over 50, तो ये हो जाएगी इम्प्रॉपर. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए. Okay, ma'am. Ma'am, 50 over 50 is also an Thank you, improper ma'am. fraction. It's also an improper fraction because it is no more a part now. अब पार्ट नहीं रह गया. अब आप पिज्जा की एग्जांपल ले लो. ठीक है, पिज्जा है आपके पास, पिज्जा के आपने किए 4 पार्ट्स. अब अगर आपने 4 में से 4 पार्ट्स खा ही लिए, सारे के सारे पार्ट्स खा लिए, इसका मतलब आपने 1 पिज्जा खा लिया. तो अब फ्रैक्शन तो रही नहीं, आप ये होल बन गया ना. फ्रैक्शन तब तक रहेगी जब टोटल में से कुछ हिस्सा लिया आपने. जब आप पूरी चीज ही ले रहे हो तो फिर वो होल बन गया. उसके लिए फिर आपके पास प्रॉपर नंबर है, उसको फिर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों लिखोगे? मार्क्स की एग्जांपल आई हैव ओनली टेकन टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट थिंक ऑफ इट लाइक द पिज्जा. पिज्जा का अगर आप कुछ पोर्शन खा रहे हो तो फ्रैक्शन यूज होंगी, लेकिन अगर आपने पूरा पिज्जा ही खा लिया, सो सिंपली सेइंग 1 पिज्जा, you've eaten 1 pizza. If now other thing you can understand कि fraction improper कब होगी? जब आपके पास total parts हो 50. Suppose parts मैंने किए 50, but उसमें से मैं 51 choose करना चाहती हूँ. Can I have 5 parts out of a pizza which was divided into 4 parts? Ma'am, it will be an improper fraction. It will be an improper fraction. I'm just asking you what's wrong with it. Total parts कितने हैं? 4 हैं. मैंने choose कितने किए? The numerator tells me मैंने कितने parts choose किए हैं. तो मैं 4 में से 5 parts choose कर रही हूँ, which is Improper. improper. Right? Improper. I hope it's clear. Tanveen? Beta, someone's microphone is on and in the background TV is running. Mine is muted. I can see that, but it's someone I can see the students who raised their hand. Chirag, beta, yes, you have a question? Ma'am, I want to ask that how there are fractions given like 5 by 4. So, ma'am, how can that be represented in the pizza? As a yes, if you have improper fraction, that simply means it contains a whole and a proper fraction. जब आपके पास improper fraction होगी, उसका मीनिंग ये होगा कि उस improper fraction में एक whole part छुपा हुआ है और एक proper fraction छुपी हुई है. Like वो one by 4. Yes, this is what we do. The numerator is written inside, the denominator is written outside, and you carry out your division. And इसको आप convert कर लेते हो into a mixed number, right? 4 ones are 4, the remainder is 1, and your mixed fraction is formed by writing quotient on the side, remainder on the top, and the denominator is same. So this is your quotient, 1 आएगा side पे, remainder is also 1, ये 1 ऊपर जाएगा, और नीचे आपके पास होगा denominator. Denominator same रहता है. तो ये बन गया 1 and 1 by 4. 1 complete pizza, एक पूरा 1 whole पूरा pizza, and then 1 by 4 means there is 1 more pizza, उसके किए 4 हिस्से, ये पूरा हो गया, and जो ये 1 by 4 है, इसका मतलब हमने ये लिया है. देखो 5 slices हो गए अब.
Does that make sense? Good. Simran, do you have a question? Yes, ma'am, if their like fraction is 1 by 1, then we will consider it as unit or improper. It 1 by 1 actually means 1. This represents a whole number. This is a unit fraction as well as an improper fraction. Could you try again? Okay, ma'am. This is a unit fraction as well as an improper fraction. Ma'am, we can Ryan, write both. yes, you can write both. Ryan, you have raised your hand. Okay, Ryan is not answering. Ashit, beta, you're asking me about which example? Ma'am, second. 5 by 4? Yes, ma'am. ओके आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर आपके पिज्जा के 4 पार्ट्स किए हुए थे और मैं लिख दूं फ्रैक्शन 5 by 4, अब आप खुद सोचो कि पिज्जा के लिखे मैंने 4 पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, द पिज्जा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मैं बोल रही हूँ मुझे चाहिए 5 out of 4, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो 4 में से 4 तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 5th पार्ट है वो मुझे मिलेगा सेकंड पिज्जा में से. आई विल नीड वन मोर पिज्जा, उसमें से मुझे 5th पार्ट मिलेगा. I mean, if we don't have second pizza, then If your fraction is 5 by 4, that means they are talking about 1 and 1 more pizza. आप बोल रहे हो ना कि ये फ्रैक्शन कैसे बन सकती है? 5 by 4 is possible, वो फ्रैक्शन पॉसिबल है. मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ 1 पिज्जा से शुरू किया था, लेकिन अगर कोई बोलता है मुझे 5 by 4 पिज्जा खाना है, that means the person is going to have 4 slices out of this first pizza. पूरे के पूरे 4 out of 4 खा लिए, और उसको जो 5th स्लाइस खाना है उसके लिए हमें एक और पिज्जा चाहिए. Just saying, it's not happening here. Why is the fraction? Yes, Sia. मैम पिज्जा का एक और कट कर सकते हैं मैम, ताकि एक और पार्ट आ सके. मैम पिज्जा को कट कर सकते Then, हैं. okay, that's a very good question. Actually, we cannot do so. अगर हमें fraction बनानी है, your object must be divided into equal parts. फ्रैक्शन लिखने की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके जब आपने पार्ट्स करने हैं तो आपने इक्वल पार्ट्स करने हैं. आई विल से ओके, यहाँ पे एक पिज्जा है और एक ये है. मुझे बताओ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 out of 2? मैम फर्स्ट वन. मैम First pizza. बट मैंने first one. okay, why first one? Because it is divided properly. Because Raise your hand of pizza in first one. before you answer. You have to raise your hand. Arman Seni, please answer. Ma'am, because first one is divided into equal parts. That's right. To write down a fraction, yes. इसमें से yes. Excuse me, ma'am. Just a minute. नहीं कीड़ा. Angad Meet. Tanveen Kaur. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beta, you raised your hand. Ma'am, no, ma'am, it was done by mistake. Okay, Tanveen Kaur. Ma'am, your voice is not coming. Tanveen Kaur. You can't hear me? Yes, she got yes. Okay. Tanvi. Damandeep. Yes, ma'am. Beta, do you have a question? No, ma'am. Okay. Yes, there was a student who was asking something. Tanvi, Ryan, Chirag, you've raised your hands. If you have a question, please ask.
or put your hands down. Ma'am, if the statement will be like 12 by 4, so we will make 3 pizzas. Yes. Okay, ma'am. So you have unit fraction, proper fraction, improper fraction by looking at the numerator and the denominator. Now, if you have a bunch of fractions, अगर आपके पास सिर्फ एक नहीं बहुत सारी fractions हो, तो उनको हम बता सकते हैं like or unlike, whether or not the group Ma'am, is sorry, like. I was disconnected. Okay. So if you have one fraction, अगर आपके पास single fraction है, उसको देख के आप बता सकते हो कि वो unit fraction है, कि proper fraction है, कि improper fraction है. But if you have multiple fractions, आपके पास एक से ज्यादा fractions हैं, तो उनको देख के हम बता सकते हैं कि वो group जो है fractions का, वो like है या unlike है. Yes, ma'am. Right? So like unlike बोलने के लिए आपके पास multiple fractions होनी चाहिए. सिर्फ एक फ्रैक्शन को देख के नहीं आप बोल सकते कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है. यू नीड 2 or more. कंपेयर करना है हमें. सो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, you have to. That is like fraction. Denominators are same, we will say that the fractions are like fractions. For example, 2 by 5, 3 by 5, 7 by 5, even 5 by 5. और 1 by 5. इसमें आपकी फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन भी हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है. वी आर ओनली लुकिंग एट द डिनोमिनेटर्स. सो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी विल कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस. एंड इफ द डिनोमिनेटर्स डोंट मैच, Unlike fractions. Unlike fractions. if you have a group of fractions जिसमें से एक का डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया, एक का डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया, तो ये जो ग्रुप होगा ये कैसा है? अनलाइक है. Unlike Fractions. fraction. Unlike fraction. I hope now you're clear about. Okay. Anyone with questions about Yes, ma'am. types of fractions? Okay. No, ma'am. Now Ma'am. No, we ma'am. will be doing operations. We will be doing operations on fractions. हम करेंगे addition, subtraction, multiplication and division. आपने ये सारा काम पहले से किया हुआ है, right? Yes, ma'am. Ma'am, changing into decimals will also come. There are, I think, a few questions maybe, but it is all into this. If you are converting your fraction into a decimal number, तो वो division में चला जाएगा. Your questions in the exercise mostly are based on this. Okay, ma'am. You have addition, subtraction, multiplication and division. Direct questions होंगे, story sums होंगे. Even the questions will be from other topics but using fractions. For example, आपने किया हुआ है area and perimeter. Same questions होंगे, area find करो, perimeter find करो, but उसमें जो values होंगी वो fractional form में होंगी. Now, before we proceed with the exercise, there is one more word we come across while doing fractions. Let me know if you remember this. Equivalent fraction. अगर आपके पास fractions हैं which are representing the same thing, they are called equivalent fractions. Let's take example of this square box. I have two squares of the same size. The first one is divided into 4 equal parts. The second one is divided into 2 equal parts. I'm going to shade 2 parts out of 4 in the first one, whereas I'm going to shade 1 out of 2 in the second one. Tell me if these two are different or same. Ma'am, same, because Ma'am, same. fraction of 1 by 2 is 2 by 4. Ma'am, yes, That's- this is same, because if we will cut 2 by 4, then it will be 1 by 2 only. Ma'am, it That's is same right. because Ma'am, the it's area is divide. same. You can, right.
Now see, I've got 2 or 3 answers here. If you look at the figure, agar aap Ma'am, it is square same koi, because area is same. that's right, that's right, that's what I'm saying. अगर आप सिर्फ फिगर देखते हो कि कितना पोर्शन मैंने शेड किया है, तो वहां से क्लियर हो रहा है कि उधर भी हाफ किया है, उधर भी हाफ किया है, राइट? द सेकेंड थिंग यू कुड लुक एट इज जो आपकी फ्रैक्शन है 2/4, इसको अगर हम कर ले सिंप्लीफाई, कटिंग कर ले, कटिंग करके इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1/2, same as the other one. Yes. And the third fraction. That's right. And the third way is I could convert 1/2 into a fraction with denominator 4. अब मैं 1/2 को अगर multiply कर दूं 2 से, तो वो बन जाएगी 2/4, right? So these type of fractions which are looking different, देखने में लगती है different है, but होती same है. One such example could be this. Check करो. Ma'am, we will first simplify it. You can simplify, right? And both represent the Equal. same. They are equal. Same, equal. Is there any other way we can check whether our fractions are equivalent or not? Yes, ma'am. Ma'am, the comparing way. Ma'am, cross By multiplication. comparing. Very good. Multiplying. Cross Very good. multiplication. Very good. Multiplication. Very good. Very good. You could And cross. LCM also. And LCM way also. That's right. Ma'am, Chirag. LCM way. That's right. That's right. Okay. I think मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको ना habitual बनाना पड़ेगा to raise your hand. There are students who are raising their hands, but before I can actually ask them to answer. अंगद बेटा आपके माइक से बहुत नॉइज आ रही है. मैम सॉरी मैम, वो मेरा फोन नीचे गिर गया था. Okay, okay, okay. So students have raised their hand, but before I can ask them to answer, other students directly are answering. But please make it a habit. Raise your hand before you answer. Okay. Damandeep, Manreet. Yes, ma'am. Beta, do you want to ask something? Ma'am, no, I have raised hand for answering the question. Okay, okay, okay. So right now we have 2 or 3 ways to check whether or not the fractions are equivalent or not. Either we can look at the figure, shaded portion को देख के हम बता सकते हैं. But अगर figure दी ना हो, सिर्फ fractions दी हो, first way आप cutting कर लो. Cutting करके अगर पता चल गया well and good. नहीं तो आप cross multiply कर सकते हो. लेकिन cross multiplication की एक disadvantage है, उसका एक drawback है कि जो cross multiplication है, it works only when if you have 2 fractions. Is that right? Yes. Cross multiplication can only be done if you have 2 fractions. If you have multiple fractions, तो हम cross multiplication नहीं कर सकते. Then I would go with the LCM method. LCM लेके हम convert कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा. And that also is used to find out or arrange the fractions in ascending or descending order. Is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You also use that method for addition and subtraction. Is that right? Yes, ma'am. So that's what we will start with. We will start with addition and subtraction. I would like you to just turn to page. This is page number 31. Excuse me, ma'am. Yes, Manreet? Ma'am, you will send the definitions in the group. Yes, I will send the definitions in the group. And today you will send. Yes. Ma'am, can you explain again? Pages will leave. Equivalent fractions? Yes, ma'am. The easiest way to check whether or not your fractions are equivalent. Let's take 2 examples here. I'm taking 3/4 and I'm taking 12/15. आप या तो इनको सिंप्लीफाई कर लो. 3/4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? सिमरप्रीत? No. No, ma'am. 12/15. Yes, ma'am. Yes, ma'am, yes. Yes. Gurshan, And it will can come you? 3/5. Gurshan, can you answer how do we simplify 12/15? Ma'am, yes. Ma'am, we will divide by 3.
Let's divide by 3. The numerator will become 4. The denominator will become 5. Now tell me, do your fractions look same? No. They look different. No. I'm If different. Ma'am. Now, if you cannot think of this, अगर आपको table नहीं आते, cutting नहीं आती, फिर हम क्या करेंगे? So I'm going to take the same fractions and I'm going to cross multiply. 3 and 15 का product Okay, ma'am. और 12 और 4 का product. Ma'am, 3 and 15, ma'am, 60. Ma'am, 3 and 15, 60, and ma'am, 12 and 4, 48. 45 and 48. Do the answers match? 45 and 48. Do your answers match? No, ma'am. Ma'am, They are no. different. So the fractions are not They're equal. different. The fractions are not Not Equal. equal. I hope it's clear now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So what I'll do is we will start with the questions tomorrow. We are not going to, because it's Okay, just 1 minute left. We will start with questions tomorrow. All right. I will send you the definitions and you can write We these. have to write in notebook. Yes. Okay. All right. I'll see you all tomorrow. God bless you. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am.